ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, नो आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। गुड, तो फिर कैमरा ऑन करो ना जल्दी से। ओके चलो शुरू करते हैं। हाँ, कल हम उसका वो लेमा फोर्थ कर रहे थे। एक्चुअली चूंकि उसका प्रूफ बड़ा था, ये 4 लेमा से, तो मुझे लगता है मैंने उसको कुछ ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में, मतलब मैं चाहता था वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं। सो वी हैड समथिंग लाइक दिस। Let me edit this. ओके, कैमरा ऑन करो ना फास्ट, क्या करते हो तुमने वापस ऑफ क्यों किए? कैमरा ऑन। All of you, roll number 13, 3, 9, 14, 11, and A is 35. All of you. उमर, तुम अटेंडेंस का ध्यान रख रहे हो? यस सर। ओके, तो चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। और तुम सो मत जाया करो, सुना करो, देखा करो बोर्ड पे क्या लिखा है, और इन केस देयर इज सम क्वेश्चन यू शुड आस्क। ओके, तो एक्चुअली मैं जो कर रहा था, हमने पहले लास्ट टाइम जो लेमा 4 से पहले वी डिफाइंड retract. So a function if A is a subset, A is a subset, किसने इसका कलर बदला फिर से, तो आज दूसरा कलर करते हैं। Now A is a subset of X where X is a topological space and it has a topology in it. Topological space, then we say A is a retract of X if there exists a continuous map F from X onto A such that f of X is equal to X for all X belonging to B. Yani F when restricted to A becomes identity. So that's the, ये हमने कल किया था, और उसी के रिगार्डिंग हमारा लेमा 4 था। लेमा 4 में ये था कि any non-empty closed subset of the Cantor set, non-empty closed subset of delta, that is the Cantor set, is a retract. And we can define such a map of delta. अब प्रूफ में हमने किया था कि let K be a non-empty closed subset, and we know that. Okay. So let K be any non-empty closed subset, of delta. Then, since delta is a compact metric space, K is compact. No. Now मैंने इसके बाद जो किया, I think I should have first proved a couple of lemmas, क्योंकि उससे easy हो जाता है। मैंने उनको थोड़ा क्या बोलते हैं साइड में रखने की कोशिश की, लेकिन उससे थोड़ा आर्गुमेंट क्लियर नहीं रहता। वो पहला ये
कि अगर D है a metric, now you have to remember that it's a compact subset of a metric space, और delta जो है that is the countable union of zeros and ones, and we've got a metric defined over delta to be summation an minus bn whole divided by 3 raised power n. N runs from 1 to infinity. Of course, an's and bn's can be belong to the set 0 1. It is a metric space, so एक हम रिजल्ट करेंगे जो ऐसे ही तुम याद भी रख सकते हो, बट दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कुछ करना नहीं है बेसिकली. सो वो ये कि अगर मैं मतलब metric is jointly continuous on a metric space, यानी मेरे कहने का मतलब है if I have a metric x, then D is a function defined from x to what? Non-negative real numbers with certain properties. You know that dxx is 0, right? Actually dxy is 0 if and only if x is equal to y. Then the symmetry, then the triangle inequality. Now D is jointly continuous. By that I mean D is jointly continuous means that if xn converges to x and yn converges to y, then D, the distance between xn and yn, would also converge to the distance between x and y. Now, इसके लिए मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा. So it implies that, मतलब ये प्रूव करना बिल्कुल easy है. It's just a straightforward application of triangle inequality, because dx and yn is less than equal to dxn x plus dxy plus dy yn. This is just the application of triangle inequality twice. So it implies that using the symmetry xn yn minus dxy is less than equal to dxnx plus dyny. Then you can similarly तुम दिखा सकते हो मतलब यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करके dxy minus dxn yn is also less than equal to dxn x plus dyny, which is the negative of this thing. So it implies that norm of dxn modulus of this difference is less than equal to dxnx plus dyny, and if xn converges to x and yn converges to y, this goes to 0, the right hand side, which means left hand side goes to 0 because it's a non-negative number. Less than equal to 0 can be only 0, which implies that of course dx and yn would then converge to dxy. ये तो एक simple सा लेमा हो. दूसरा, when I define this distance from a set, so I've got xa, xa ये हम ऐसे define करते हैं, the infimum of the distance is dxy as y ranges over a. क्या z लिख लो क्योंकि मैं y किसी और के लिए यूज करूंगा. ओके, चलो यहाँ z लिखते हैं. ठीक है, बट मतलब वही है कि infimum of the distances from x to all the members of the set. Now this is also a continuous function of x and y. यानी by triangle inequality, देखो, I can write dx z is, yeah, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ. dxa is, because it is the infimum, is less than equal to dxz, which is less than equal to dxz plus dyz. Right? This is just, I'm adding क्या बोलते हैं, non-negative quantity. So it implies that
Now this is true for all z belonging to A, because of course this is the infimum of this range, because actually this is true for all z belonging to A. Then I'm just adding a non-negative thing, so it becomes bigger, right? So what I do, now this is true for all z belonging to A. It implies that I should write xz. Okay, it means that dxa minus dxy जो है is, इसको मैंने यहाँ लाया, जस्ट मैंने क्या किया, मैंने x लिया, xz लिया, मैंने यहाँ गलत किया ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज की मैंने, xy मतलब where z is any element of, ठीक है. Now xy is less than equal to dyz for all z belonging to A. Now this left hand side is a fixed thing, it has got nothing to do with the set A, right? Because y could be any member of x, so this does not, so if I take this infimum on the left hand side, right, so it would imply that, so taking the infimum on the right hand side, taking infimum over all z belonging to A, I should get dxa minus dxy is less than equal to dya. That's simple. उसके बाद इससे हमें मिला dxa minus dya is less than equal to dxy, which implies that similarly using the fact that जो metric होता है वो symmetric होता है with respect to x and y, मतलब तुम दिखा सकते हो कि dya minus dxa is less than equal to dxy. Actually dyx आना चाहिए, but that's the same thing as dxy. So which implies that dxa minus dya in modulus is less than equal to d of xy. That means d, अगर मैं यहाँ पे खाली रखूं, a is a continuous function on x. So we are done. मतलब ये है continuous function. Okay. So इतना करना, एक्चुअली ये तो लेमा से जो वहां पे अगर हम यूज करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो लेमा 4 हमारा. So अब मैं वापस जाता हूँ अपने प्रूफ की तरफ और इनको भी यूज करूंगा. अब मैंने k को किया, ये नहीं काटना था, ये जरूरत था. Okay. Now k is compact. So for each x belonging to x, define fx to be कैसे लिखें हम, define fx to be an element, to be the element of k such that f of x fx is equal to infimum of dxx dash such that x dash belongs to k. और जिसको हम लिखते हैं, चलो बजाय इसके हम लिखेंगे ऐसे, कहाँ गया, चलो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, नो इशू, dxk.
यानी fx जो है, पहले तो ये है कि fx बिलोंग करेगा k को. Now since now such a unique fx does exist, yeah, because k is compact. And what? And t अगर मैं यहाँ k लिखूं is continuous function. Now it would be assumed there would be fx belonging to k such that this is true. So in this way, I have defined a map. I have taken an x here and uniqueness. Uniqueness हमने exist तो करेगा by compactness. Now the uniqueness, ये जरा यहाँ रख करूँ फिर दूसरे पेज पे जाऊँ. मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ. The uniqueness is proved by कि ये unique होगा of fx is proven by the fact that if dxy is equal to dxy dash, then y is equal to y dash. और कोई दूसरा होगा, because this map would be 1 1 in this particular case, because dxy is equal to summation क्या है अपना xn minus yn divided by 3 raised power n runs from 1 to infinity, and the xy prime would be of this form, summation n runs from 1 to infinity, xn minus yn prime divided by 3 raised power n, where of course xn, yn prime, they all belong to the set 0 1, right? Because d is a metric on the counter set. Now what I'm claiming that अगर ये दोनों बराबर है, then y must be equal to y prime. Now that's easy to see because the possibility for xn, मतलब ये जरूरी नहीं है metric space में ऐसा हो, but in this particular instance this would be true. Why? देखो अगर ये दोनों बराबर है, and you have to remember here, of course needless to say, कि x है x1, x2, so on and so forth, y है अपना y1, y2, a sequence of zeros and ones, and so is y prime. इसको मैंने अपना y1 prime, y2 prime, so on and so forth. Now look at this. अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या होगा? अगर ये दोनों बराबर हुए, अगर summation n runs from 1 to infinity, xn minus yn by 3 raised to power n is equal to summation n runs from 1 to infinity. देखो एक और तरीका भी है ज्यादा सिंपल तरीके से दिखाने से, बट वी कैन डू इट हियर आल्सो. अब देखो सिचुएशन क्या है, x एंड y n जो है ये सारे के सारे या तो जीरोस हैं या वंस हैं. अब सपोज xn इज 0, राइट? तो xn यहाँ पर तो सेम रहेगा 0. अब अगर yn 0 या 1 हो सकता है, इन केस yn इज 0 तो ये भी 0, ये भी 0, राइट? मैं कह रहा हूँ इन मेंबर्स में. तो so this is basically ultimately a sum of the form 1/3n, है ना? मतलब 1/3n ही आएंगे ना. देखो या तो ये 0 है या 1 है, या फिर दोनों 1 है, या फिर दोनों 0 है ना? यही पॉसिबिलिटीज है ना, या फिर ये 1 और 0 है. अब ये पॉसिबिलिटी जो एक्सन और वाई एन प्राइम्स में है, अब अगर ये फिक्स करेंगे, सपोज ये 0 हो और ये 1 है, और यहाँ पर भी ये 0 है, ये 1 है, तो जब मैं इसको सम करूंगा ये बनेगा ऑफ द फॉर्म 1/3n. और अगर ये सम बराबर है तो वो सारे के सारे इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज. और ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि मतलब अगर यहाँ पे कोई टर्म्स मिस करती है ना, तो वो इसके बराबर नहीं है, क्योंकि वो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं रहेगी. अगर मैं एक को हम बीच में से निकाल दे, फिर हमें जंप मारनी पड़ेगी ना. ऑफ कोर्स वो लेस देन होगा. यानी मेरे कहने का मतलब है, जब मैं कह रहा हूँ उन दो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम बराबर है,
तो ये तभी हो सकता है जब ये जो नॉन जीरो टर्म्स हैं या जीरो टर्म्स हैं वो सारी की सारी मैच करें, क्योंकि अदरवाइज देयर वुड बी अ जंप इन द ज्योमेट्रिक सीरीज और सम वोंट बी सेम। लेस देन होगा लेकिन सेम नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं सम सेम है तो उसका एक ही चॉइस है कि xn minus yn must be equal to xn minus yn prime for all n। और अगर वो सच है, again using the argument that this could be either 0 or 1, 1 or 0, so that it would automatically imply that yn must be equal to yn prime for all n, which means that मतलब ये तुम खुद थोड़ा रफ वर्क अगर तुम ये पॉसिबिलिटीज देखोगे ना, ये 0 है ये 1 है, लेकिन ऑफ कोर्स xn को सेम रखना होगा। तुम देखो फिर तुम्हें yn को भी सेम रखना होगा अगर इनको बराबर करना है। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। Anyway, so therefore I have got now a unique fx is now the unique minimizer कह सकते हैं हम। So that is fx is a unique minimizer मैं कहूँगा of this continuous function dxk in delta. Okay, a unique minimizer of this function, fine, in case fx belongs to k, the compact subset. Now इतना करने के बाद अब हमारा वंस हमने वो तो थोड़ा prelim work किया तो it's done. Now we claim that this function f from x delta to k is a retraction. तो उसके लिए क्या दिखाना होगा, ये कंटिन्यूअस है और पहले जब इसको restrict, of course f of x would be 0 if x belongs to, sorry मैं क्या कह रहा हूँ, f of x would be equal to x if x belongs to k. पहली बात तो it's identity over k, that's just the definition, क्योंकि हमारे हिसाब से रीजन तुम लिख सकते हो यहाँ पे because txk is 0 if n is equal to dx fx if x belongs to k, which implies that x must be equal to fx. मतलब हमें पता है ना कि डिस्टेंस 0 तभी होगी जब ये दो सेम। Okay, anyways, we show the, अब तो सिर्फ दिखाना ये continuous है, so of course it sends this to her. It's a well-defined function, in fact a one-to-one function, not one-to-one तो k पे है ना? Okay. Right. Now let's show that. Now to complete the proof, let us show that f is continuous also. F is continuous also. उसके लिए हमने क्या किया? Now let x belong to x and suppose f of xn, oh no, xn converges to x. We show that f of xn converges to f of x. Now since f of xn is contained in k and k is compact and hence sequentially compact, there exists a subsequence xn sub k of xn, xn I लिखता हूँ मैं क्योंकि k हमने यूज किया है, such that f of
xni converges to some y belonging to k. अब हम यूज करेंगे वो and we are done. Now d of xfx जो है वो फिर हो जाएगा, and of course since of course क्योंकि xn converges to x, xni जो है वो उसकी subsequence भी x को ही converge करेगी, वो तो है ही. So dxfx by our definition is basically dxk, but मैंने कहा था this is a continuous function of x. When I fix this k, so this should be limit, this should be, चलो मैं लिख देता हूँ, limit I approaches infinity x n sub I k, limit को हम बाहर निकाल सकते हैं because it is continuous. Limit I approaches infinity d x n k, by definition this has to be equal to limit I approaches infinity, तो ऐसे ही रहेगा, but this is equal to x n I f of x n I. और मैंने कहा था if x n I approaches to x and f of x n I approaches to y, then this must approach to, this is actually equal to d x y. Now by the uniqueness of fx, by the uniqueness fx, we have f of x is equal to y, and hence f is continuous. तो ये हो गया अपने लेमा 4. इसके बाद हम आते हैं प्रूफ ऑफ द थ्योरम पे. प्रूफ ऑफ द थ्योरम, अब मुझे रिमाइंड करना तुम्हें होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2 लेक्चर्स हो गए. प्रूफ ऑफ द थ्योरम, थ्योरम जो हमें प्रूव करना था वो था कि एवरी कॉम्पैक्ट मेट्राइजेबल स्पेस या मेट्रिक स्पेस व्हाटएवर is a continuous image, is a continuous image of the Cantor set. Okay, now let's start. Now let X be a compact metrizable space. By lemma 2, X can be embedded inside inside the Hilbert cube. Lemma 2 वही था कि I can say X is homeomorphic to a subspace, to a subspace Y or Hilbert cube, जिसको हमने किया था represent by this capital H, which is basically this damn thing. Okay. Now अब जो ये y है, we define phi, let phi from y to x be such a homomorphism. उसका नाम हमने हम जो y और x को कनेक्ट करता है, मतलब means x and y are same topological spaces, so be such a homeomorphism. उसका नाम हमने इस मैप का दिया phi. By lemma 3, there exists a continuous mapping psi from Cantor set delta onto H. Therefore, psi inverse of y, because y h, no, y lies inside h, so psi inverse of y, अगर मैं इसको वापस, is a closed subset of delta Cantor set. Why closed? Because it's a why closed? Because it's compact, right? So because H is compact, you know, or of course
X is compact, so इसकी जो image होगी वो भी compact होगी under a continuous map. So हाँ ठीक है बिल्कुल. तो psi inverse is now a closed subset of delta. By lemma 4, there is a continuous retraction. There is a continuous, simply retraction. The retraction में continuity is assumed. F from delta to any subset. So in particular, delta to psi inverse of y, psi inverse of delta, satisfying that f of z is equal to z for all z belonging to psi inverse. It's identity of on psi inverse of delta, this subscript जहाँ पर ये retraction है. तो phi composition, psi composition f is a continuous function in this construction from delta on to x. अब schematically मुझे लगता है इसको दिखाना चाहिए. Schematically हम दिखा सकते हैं delta to psi inverse of y जो है, I'm going to map f, then after that I apply psi and I reach y, and for on y I go to via phi to x, because this is a homeomorphism, y to x, this is a homeomorphism, this is a continuous map. So इसको अगर मैं compose करता हूँ तो this is our retraction, that's continuous. This psi was, of course, this is a closed subset of delta retraction to a subset. Then of course this is a via the psi, because this is a closed subset of Hilbert cube, and of course x is our compact metrizable space. The थोड़ा सा convoluted है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, but this is our theorem. हाँ ठीक है, इसको फिर से देख लो, कहीं पे अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे फिर से पूछ लो, तो there is no issue. अभी हमारे पास 6 मिनट है, तो देखते हैं हम इसकी corollary कर सकते हैं. Now corollary ये है, for a compact metric space X, compact metric space X, Cx, by that I mean all functions, in this case real functions ले लेते हैं, real value, such that f is continuous is separable. अब Cx तुम्हें पता है, ये जो Cx है, this is a vector space because sum of two continuous functions is again continuous, and scalar multiple of a continuous function is again continuous. Furthermore, so Cx is indeed a vector space, and it has a norm, a natural norm defined on it. That is, norm of f is equal to supremum x belongs to x modulus of fx. Because the supremum would be attained because the continuous image of a compact set is compact. So इसकी जो image होगी, it would be a closed bounded interval. So this is, so a closed bounded interval जो होगा उसका supremum होगा, obviously. So अगर f continuous है और जो compact x metric space है, then this thing is a finite real number. It satisfies all the properties of the norm. So वैसे हम करते हैं C01 is separable, isn't it? Function analysis 1 में. और अगर तुमने नहीं किया तो छोटा सा result है. This is always separable. Of course वही है, norm वही है, norm of f.
is equal to supremum t belonging to 0 1. Again, this would be a क्या बोलते हैं particular instance of x where this 0 1 is compact, और यहाँ पे कोई भी compact metric space है, यहाँ पे 0 1 है, which is a compact metric space under usual metric on R. So let's try to prove it, and we're going to use, of course, corollary है, तो we're going to use previous theorem. Now by previous theorem, there exists a continuous subjection from rho from x to delta to x, because every compact metrizable space जो है, it is the continuous image of the Cantor set. ये कहाँ से आ गया? क्या था ना भाई? Every compact metric space is a continuous image of a Cantor set. So I have this rho that is a continuous surjective map from delta to x. Okay, now consider where, of course, delta is the Cantor set. Define psi from the collection of all continuous functions on x to collection of all continuous functions on delta via the map psi of f is equal to f composition rho. Now obviously f belongs to cx, so let me अगर मैं इसको schematically draw करूंगा, so f would send x to R, and if I apply after that rho, now rho sends delta to x. So this composition जो है, both are continuous functions. So this is f composition rho. So this is a continuous function on delta. So f composition rho is a continuous function from delta to rho. So this is finally defined. And psi, then clearly psi is a linear isometry. Linear तो straightforward है. Isometry हम दिखा सकते हैं, because right, कैसे करेंगे? हम देंगे कि इसका नॉर्म दोनों साइड से बराबर आता है ना? So norm of psi of f is equal to norm of f composition